Item number 2, Dr. Jitendra Singh. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की सूचीबद्ध कार्यवली की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के आगे अंकित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, Madam, with permission, I write to lay the papers on the table of the House pertaining to the Ministry of Parliamentary Affairs as mentioned against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 4, माननीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी। माननीय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची पे क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, माननीय मंत्री श्री BL वर्मा जी। मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, माननीय मंत्री डॉक्टर L मुरुगन जी। Respected Chairperson, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. आइटम नंबर 7, माननीय मंत्री श्री रवनीत सिंह जी। Respected Ma'am, I raise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 8, माननीय मंत्री श्रीमती नीमूबेन बामणिया जी। सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के आगे उल्लिखित कागजात हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 9, माननीय सदस्य डॉक्टर D पुरंदेश्वरी जी। कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति के पहले और दूसरे प्रतिवेदन की हिंदी और अंग्रेजी की एक प्रति प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 10, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी। Madam, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of the implementation of the recommendations contained in the 5th report of the Standing Committee on Energy on the demand for grants 2025-2026 pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy. आइटम नंबर 11, माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 145th report of the Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice on demands for grants 2025-26 pertaining to the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. Thank you, Honorable Speaker. आइटम नंबर 12, माननीय मंत्री डॉक्टर P चंद्रशेखर जी। Madam, in pursuance of the Direction 73A of the Honorable Speaker Lok Sabha, I would like to lay statements showing status of implementation of the recommendations, observations contained in the 2nd and 5th reports of Standing Committee on Communications and Information Technology on demands for grants 2024 to 2025 pertaining to Department of Post and Department of Telecommunications respectively on the table of the House. आइटम नंबर 13, माननीय मंत्री श्री रवनीत सिंह जी। Respected Ma'am, I raise to make a statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 3rd report of the Standing Committee on Railways, 18th Lok Sabha on demands for grants 2025-26 of the Ministry of Railways, presented to Lok Sabha on 10/3/2025. A statement showing implementation status of all the recommendations contained in the report is enclosed. Since the statement is voluminous, I request the same may be taken as read. आइटम नंबर 14, माननीय मंत्री श्री सुकांत मजूमदार जी। With your permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of recommendations, observations contained in the 253rd report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on demands for grants
2025-26 of Ministry of Development of North-Eastern Region, M. Donor. The present status of implementation is as per the statement which is laid on the table of the House. Thank you, ma'am. Item number 15